Hello students, now we are doing the third question depending on Stokes theorem type 3. Okay, the question here, the question is prove that single integration over the curve C vector A cross vector R dot dr is equal to 2 vector A dot double integration over the surface S ds bar. So by using the Stokes theorem, we will prove this value is equal to this value. So first we should know this is the Stokes theorem. Okay, connection in boundary curve and surface. Okay, vector f dot dr is equal to double integration del cross f dot n cap ds. So when you compare this vector f dot dr, here vector a cross vector r dot dr, then vector f is equal to vector a cross vector r by comparison. So del cross f, the value of del cross f will be del cross vector a cross vector r. Okay, we will take this value and find the value दिस. हमें ये वैल्यू से स्टार्ट करना है और इससे ये वाली वैल्यू लानी है. ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो सी हियर वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर. ओके, देन डेल क्रॉस एफ will be del cross vector A cross vector R. Okay, now you know A cross B cross C is equal to A bar B bar C bar is equal to A dot C vector A dot vector C vector B minus, this is the formula to find out the triple integration of ABC. दिस इज़ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था, तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी. देखो इसको याद करने का क्या है, यहाँ पे ए पहले सी के साथ, सबसे दूर वाले के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा. ए डॉट सी बी साइन आएगा माइनस, फिर ए डॉट बी vector C. When we apply this formula in here, so what will we find out? Del dot vector R vector A minus del dot vector A vector R. So you know very well del dot vector R value and this value. अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है. डेल डॉट वेक्टर आर, द वैल्यू ऑफ डेल इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड. द वैल्यू ऑफ आर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड k cap. Now when you dot product, then I cap dot I cap will be 1, then it will be, and I cap dot j cap will be 0. So this value only multiply by this in dot product. So del x upon del x, this value will only multiply by this value, del y upon del y, del z upon del z. So value will be 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. So this value will be del dot vector r is equal to 3. MCQ में आपको पूछ सकते हैं what is the value of del dot vector r, del cross vector r. Okay, so del dot vector r is equal to 3 and del cross vector r is equal to 0.
Now we will find out this value, del dot vector A. Del dot vector A, the value of del is I cap del by del x j cap del upon del y plus k cap del upon del z डॉट वेक्टर ए वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू है a1 i कैप a2 j कैप plus a3 k cap. Okay, this multiply by dot product I cap dot I cap, this value only multiply by this value, then it value will be a1 is constant, then it value will be a1 del by del x, a2 del upon del y, a3 del by del z. Okay, when this is multiplied by vector r, del dot vector A vector R, a1 del by del x, a2 del upon del y, a3 del by del z is multiplied by xi cap yj cap zk cap. See here there is no any dot product, no any cross product, so we will simply multiply this value whole this value. Okay, so a1 del by del x and write this value xi cap yj zk, a2 del upon del y xi yj zk and a3 del upon del z xi yj zk. Okay, so we will partial differentiate with respect to x, so only this will consider, this value will be 0, so it value will be a1 I cap. The differentiation of x with respect to x is equal to 1, then it will be a1 I cap. Similarly a2 j cap, a3 z का हो जाएगा 1, बचा क्या k, तो a3 k cap, then it will be the value of vector A. So we will write here this value is equal to del dot vector R is equal to 3 vector A minus vector A, then it will be 2 vector A. Okay, 2 vector A. So see here, its value will be 2 vector A. Then vector f dot dr, this is the Stokes theorem, we will put the value, vector f is vector a cross vector r dr. Okay, यहाँ पे dr है ये, and डबल इंटीग्रेशन एस, इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास 2 वेक्टर ए एन कैप डी एस, तो मैंने आपको बताया था एन कैप डी एस, सी हियर एन कैप डी एस को वी कैन राइट डी एस बार, इस तरह से भी हम लिखते हैं. ठीक है, तो सी 2a is constant, it will outside of the integral n cap ds will be ds bar to 2 vector a double integration ds bar. This is the right hand side and we proved this. Okay, I hope you will understand. If you have any doubt then please ask. Okay, thank you.